I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is forms in HTML. Learning aims. After studying this chapter, you will be able to create form using HTML tags in embedded audio and video files. So, introduction to forms. Forms are one of the most powerful parts of a web page. So far, we have studied about the usual HTML commands like HTML head and body tags. We have also learned how to create tables and link the web pages, but we must have noticed that if we view our document in a web browser, then the document will be seen as it is. That is, no change can be made there. Neither a text can be entered nor any choice can be made in the document on the browser directly. To do so, a tag is available called the form tag. So in reality, HTML forms are elements responsible for adding interactivity to web documents. तो HTML पे body tag, head tag, HTML tag, web tables, web browsers, hyperlink कैसे बनाते हैं वो तो हम देख चुके हैं. But interactive web page को कैसे बनाया जा सकता है वो होता है HTML form के element से. So what are the uses of forms? Forms can be used for the following: to add to your web pages a guest book, order forms, surveys, get feedback, etc., to gather information from a visitor or customer for immediate or for later use, to gather different kinds of user input, that is fields to type in text, menus to select items from, and radio buttons to choose items. तो guest book में pages add करने हैं, order forms में, surveys में वो हो सकता है, feedback आप ले सकते हो, visitors जो आते हैं उनकी information आप ले सकते हो for immediate और later uses. नया कोई आपका venture start हुआ है उसमें आपका feedback form बहुत ज़्यादा important होता है to better और uplift your services. So इन सब जगहों पे आपके forms बहुत beneficial रहते हैं. Now, how does it work? The user enters the data in the form, the user processes the enter or submit button, and the web browser accepts this information and sends it directly to a web browser. A customized program at the web server is invoked to handle the form information. These programs then manipulate the information, store data, and send a feedback page to the viewer. Thus, when the form is displayed in a web browser, the user can make a choice and some text can be entered using the interface elements. This form mate can be submitted to a destination point whenever required. तो आप data form में क्या क्या कर सकते हो? User enters कर सकते हैं अपना data, enter और submit, फिर वो बाद में press कर देते हैं. Then web browser information को accept करता है और उसको directly web server तक भेज देता है. Customized program इससे invoke हो जाता है. हैंडल कर सकते हो आप सारा डेटा और मैनिपुलेट भी आप उसको कर सकते हो. एंड देन फर्दर अगर किसी को भेजना है जो यूज कर सकता है इस डेटा को, दैट कैन ऑल्सो बी डन. Now basic form constructs. The basic construction of an HTML form includes the start tag, which is the form tag, and ending form, the close tag. The actual form elements where the visitor enters the information, the submit or reset buttons, that sends all the collected information to the server or clear the form information respectively. अब आते हैं आपके basic form construct पे. Opening form और closing form tag के साथ ये start होता है. Basic elements इसमें आते हैं जो visitor enter करते हैं information, and submit और reset buttons सारी information collect हो सकती है और आगे forward भी हो सकती है. Then you have the form tag. The form tag tells the browser where a form starts and closing form denotes where the form ends. Closing tag क्या होता है पहले भी आपको बताया जा चुका है. एक एंगुलर ब्रैकेट आएगा, / आएगा, फॉर्म या जो भी नाम है, और एंगुलर ब्रैकेट से क्लोज. ये हमेशा क्लोजिंग टैग आपकी रहती है. Then a opening form tag is thus a container tag. Everything contained between these opening and closing tags is the part of the form. अब opening form tag, closing form tag के बीच में ये जितनी भी चीजें आप डालोगे वो सारा आपका फॉर्म का पार्ट होता है. So what is the syntax? You have opening HTML tag, opening head tag, opening title tag, my page, and then closing title tag, closing head tag. Then you have opening body tag, then you have angular bracket, exclamation mark, 2 hyphens, HTML code, then again 2 hyphens and 1 angular bracket. Then you have opening form tag. Then again you have, this is the format जिसमें आपके elements आते हैं. Angular bracket आ जाएगा, exclamation mark, 2 hyphens, form elements in HTML, again 2 hyphens, and then the closing angular bracket. Then you have the closing format tag, form tag. Then you have again angular bracket, exclamation, 2 hyphens, HTML code, 2 hyphens, and then the closing tag, closing angular bracket, then the closing body tag and the HTML tag. This entire is the syntax for your form, which is a container tag. It is possible to add all kinds of HTML tags between the opening form and closing form tags. This means that a form can easily include a table or an image along with the actual elements.
Forms do not actually process information. For something to be done with the information, it must be sent somewhere. The form tag then must specify where the information is to be sent and also how it is to be sent. The information is supplied using the action and method attributes respectively. The action attribute specifies where the information will be sent for processing. Information processing destinations can be CGI programs, JavaScript functions or an email address. तो अब आपका यहाँ पे जितने भी HTML जो आपके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स होते हैं, इसके बीच में आपके सारे फॉर्म के एलिमेंट्स आते हैं, बट इस इन्फॉर्मेशन का आप कुछ कर नहीं सकते हो. इस इन्फॉर्मेशन का कुछ प्रोसेसिंग तभी हो सकता है जब इसको कहीं पर भेजा जाएगा, वहां से प्रोसेसिंग होगी, इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट होगी, एंड देन ओनली समथिंग कैन बी डन विद दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन. Now there is a note. A form may contain markup tags to mark up your text. A form cannot be nested. That is, it is not possible to have a form inside a form. यानी कि एक फॉर्म आपने बना दिया है, उस फॉर्म के अंदर दूसरा फॉर्म आपका नहीं हो सकता. इसका मतलब होता है nesting. It cannot be nested. If the form is in a frame, it is a must to include the attribute target as part of any URL, as in target is equals to top to load the result in the full body of the current window. Now let's see the attributes of the form tag. So you have name, attributes, description of the attribute and the syntax for the same. Name, it specifies the name of the form. Form कैसे आपका होता है? सेम आपका जो ओपनिंग टैग्स होते हैं उसमें हमेशा सिर्फ दो आपके एंगुलर ब्रैकेट्स आएंगे. स्पेसिफिकेशंस आपकी इक्वल टू के बाद दो इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में आ जाती है. सो फॉर्म नेम इज इक्वल्स टू फॉर्म नेम, जो भी आपका फॉर्म का नाम होगा. नाउ एंग टाइप, इट specifies how the data is sent to the destination. It encrypts the data and sends it as it is to the destination place. Form encrypt is equals to plain/text. अब एंग टाइप एनक्रिप्ट करता है, जैसा डेटा सेंडर भेजता है वैसे का वैसा वो बिना ऑल्टर करे रिसीवर को भेज देता है. Then method, it is required when data is sent or transferred to some other user or some other website. Again, form method is equals to post/get. अब ये मेथड आपका तब यूज होता है जब आपको डेटा किसी थर्ड पार्टी को भेजना होता है. Then action, it specifies the destination addresses of the user to whom the form is required to be mailed. Form action is equals to mail to colon and then the URL, जहाँ पर आपको एक्शन से आपका जो डेजिग्नेशन होता है वो पता चलता है कि आपको एक्चुअल में वो मेल भेजना किसको है, रिसिपिएंट कौन है. Then we have the input tag. This tag is required when the user has to give some input or data. This tag is always used within the form tag. Thus, the input tag defines a form element that can receive user input. जब आपको कोई input देना होता है या data डालना होता है, तब आपका form tag में input tag use होता है. So we have the type attribute. This attribute determines the specific sort of form element to be created. That is, this attribute specifies the type of input we want from the user. It can be used to create the following types of interface elements. For example, button, checkbox, radio, text, submit and reset, image or फाइल. तो यहाँ पर आपको एलिमेंट्स जो सॉर्ट करने होते हैं, जो आपको क्रिएट करने होते हैं, ये आपको टाइप एट्रीब्यूट उसमें हेल्प करता है. To insert button in the form, the different attributes of the input tag are, you have different attributes and description for it. Type, it specifies the type of form element to be included in the form. Name, it specifies the name of the button, and value, it specifies the text to be displayed in the button. तो यहाँ पर आपका इस एट्रीब्यूट में आपका टाइप होता है कि आपका फॉर्म किस टाइप का है, नाम क्या है आपके फॉर्म का या टाइप का, एंड वैल्यूज आपकी प्लेस कर दी जाती हैं जो भी टेक्स्ट में आपको डिस्प्ले करनी है. So syntax is angular bracket, which is the opening input type tag, is equals to button in between double inverted commas. Name is equals to button1, value is equals to open. This will place a button on an HTML form with the value open displayed on it. ये syntax आप दोगे तो HTML के ऊपर एक बटन प्लेस हो जाएगा जिसमें आपको open लिखा होगा. Now example 1, angular bracket, exclamation mark, doc type, HTML, and then again you will close the tag. Then you have opening HTML lang tag is equals to en in between double inverted commas, and then opening head tag, opening title tag, input tag example, button in between two normal brackets. Then you have the closing title tag. Then you have closing head tag. Then body bg color tag is equals to aqua. Opening form tag, opening p tag, this is the first button. Then opening input type tag is equals to button, value is equals to open, name is equals to button1, and closing p tag. Then you have opening p tag, this is the second button.
Input type is equals to button, value is equals to close, name is equals to button 2 and then the closing p tag. Closing form, body and HTML tag. Output क्या होगा? This is the first button जहाँ पे आपको open लिखा होगा and this is the second button जिसके आगे आपका close लिखा होगा. Now in the above example, a form is created which includes two buttons, namely open and close, and the form is given name called form 1. तो ये ऊपर के जितने भी syntaxes है, form आपका form 1 के नाम से होगा, दो buttons उसमें present होंगे with the names open and close. Now to insert checkbox in the form. To insert a checkbox in the form, the different attributes of the input tag are type. It specifies the type of form element to be included in the form. Name, it specifies the name of the checkbox. Value, it specifies the value sent when the checkbox is selected. Checked, specifies that the checkbox is checked by default. अब आपका आ जाता है वही सेम है आपके एट्रीब्यूट्स ले देके, मीनिंग भी उन चारों के सेम है. किस टाइप का फॉर्म आपका सिलेक्ट होगा, नेम क्या है आपके चेकबॉक्स का, वैल्यूज क्या सेंड करनी है आपको व्हेन चेकबॉक्स इज सिलेक्टेड, एंड चेक्ड यानी कि आपके चेक होता रहता है बाय डिफॉल्ट इन योर चेकबॉक्स. Syntax, you have opening input type is equals to checkbox, name is equals to checkbox 1 and value is equals to value 1. This will place each box on an HTML form with value 1 displayed on it. इससे क्या होगा, ये syntax जैसे ही आप दे दोगे HTML पे आपका values given होगा with value 1 written in your each and every checkbox. Example 2, opening angular bracket, exclamation mark, doc type HTML, closing angular bracket, then you have HTML lang tag which is in between two inverted commas en, and en stands for English. Opening head tag, opening title tag, checkbox example, closing title tag, then you have closing head tag. Then you have body BG color tag is equals to silver in between inverted commas, double inverted commas, then opening H1 tag, enter your choice, closing H1 tag, opening form tag, opening H2 tag, pizza toppings, colon, and then closing H2 tag. Input type is equals to checkbox, mushroom, and then the opening BR tag. Then you have input type is equals to checkbox. Then you will close this tag, black olive, which is the opening BR tag. Then you have opening input type tag is equals to checkbox, sausage, opening BR tag. Then you have input type tag, checkbox, spinach, BR tag. Then input type is equals to checkbox, oregano, BR, both the opening tags. Then input type tag, submit, value is equals to submit, closing form, body and HTML tag. ये सारे syntaxes को with specifications जब आप डालोगे तो आपका इस तरीके से एंटर आ जाएगा, चेकबॉक्स आ जाएगा. जैसे आप जब ऑर्डर भी करते हो ऑनलाइन तो इस तरीके के आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं. जो जिन चेकबॉक्स को आप सिलेक्ट करते हो वो आपका कस्टमाइज हो जाता है. एंटर योर चॉइस, पिज्जा टॉपिंग, मशरूम, ब्लैक ऑलिव, सॉसेज, स्पिनच, ऑरिगैनो. जिन पे आप टिक करोगे, सबमिट करोगे, वो आपका कस्टमाइज हो जाएगा. Now to insert radio buttons in the form. To insert a radio button in the form, the different attributes of the input tag are attributes. You have type, it specifies the type of form element to be included in the form. Name specifies the name of the radio button. Value specifies the value to be returned to the server if the checkbox is selected when the form is sent to the destination. The default value of this attribute is on. Checked, it indicates that the radio button is selected, which can be deselected when another choice is made. तो इसमें आपके स्टार्टिंग की तीन तो बिल्कुल वही सेम है. आखिरी में जो है ये इंडिकेट करता है कि रेडियो बटन सिलेक्ट हो गया है, जो आप बाद में डिसलेक्ट भी कर सकते हो जब दूसरी चॉइस आपको डालनी हो. Now syntax, input type is equals to radio, name is equals to radio 1 and value is equals to value 1. This will place a radio button on HTML form with the value 1 displayed on it. अब इस syntax के साथ आपका HTML पे radio button आ जाएगा with the value 1 written on it. Example 3. Opening HTML tag, opening head tag, opening title radio example, closing title tag, then you have closing head tag. Body BG color is equals to pink. Then you have opening H1 tag, please select the gender, closing H1 tag. Then you have the opening form tag, then you have input type tag is equals to radio, name is equals to R1, male, BR tag. Then input type tag is equals to radio, name is equals to R2, female, BR tag. Then you have input type tag is equals to radio, name is equals to R3, transgender, BR tag. Then you have opening BR tag, input type is equals to submit, value is equals to submit, and then you have the closing form, body and HTML tag. Output आपका आ जाएगा, please select the gender, male, female, transgender, जो भी आप select करोगे, submit करोगे, वो information आपकी चली जाएगी. Now to insert text box in the form. To insert a text box in the form, the different attributes of input tag are used. ये सारे आपके attributes हैं. Type, it specifies the type of form element to be included in the form. Name, it specifies the name of the text
box button. Max length, it specifies the maximum number of characters a text box can accept. Value, it specifies the initial value of the text element. Align, it specifies the default text to be displayed in the box. It specifies show the text in the field is aligned. अब आपको कभी-कभी इंटरैक्टिव फॉर्म्स में एक टेक्स्ट बॉक्स आता है जहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो. ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स हैं. नेम, मैक्सिमम लेंथ यानी कि कितने कैरेक्टर्स आप उसमें लिख सकते हो. Syntax, input type tag is equals to text, name is equals to text1, value is equals to first name, max length is equals to align is equals to left. The above syntax will insert a text box in the form where the user can enter maximum of 25 characters in it and the text will be left aligned. अब left alignment होगी text की और जो भी आपका ये आपका एक blank text box form में add कर देगा जहाँ पे user maximum 25 length के characters को insert कर सकता है. Now example 4. Angular bracket, exclamation mark, doc type, HTML closing tag, then you have opening HTML language is equals to EN, which is English, then opening head tag, opening title tag, text input example, closing title tag, then you have closing head tag. Body BG is equals to yellow color, then H2 opening tag, subscribe to your world, closing H2 tag. Just fill out this form and submit it by clicking on the click me to send it in button. Then form method tag is equals to post, action is equals to https://www.yourworld.com, then // and then the closing tag. Both the BR tags, first name, then you have input type tag is equals to text, name is equals to first, max length is equals to 25 and 2 BR tags. Then last name, input type tag is equals to text, name is equals to last, max length is equals to 24 and then again 2 BR tags. Input type is equals to submit, value is equals to click me to send it in. Then you have the closing form, body and HTML tag. Certainly here's the description of the select tag which appropriate spaces. अब बिल्कुल इसी तरीके का आउटपुट आपको आ जाएगा. सब्सक्राइब टू योर वर्ल्ड आपका जो वेबसाइट है, फॉर्म को फिल करिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड क्लिक मी टू सेंड इन सारे सिंटैक्स के साथ ये आउटपुट आपका आ जाएगा. Then you have the select tag. The select tag defines a selection list on an HTML form. A selection list displays a list of options from which the user can select an item. From a selection list, one or more than one item can be selected at a time. The select tag is used to construct drop-down list boxes, also called drop-down menus, and scrolling list boxes, also called the scrolling menus. Drop-down menus are probably the most flexible ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी एडेड टू अ फॉर्म. अब सिलेक्ट टैग आपका आता है, ये आपके HTML फॉर्म पे अलग अलग लिस्ट आपको शो करता है. एक ही बार में फ्रॉम अ सिलेक्शन लिस्ट आप एक या एक से ज़्यादा लिस्ट को भी चेक कर सकते हो. एंड सिलेक्ट टैग में आपका एक ड्रॉप डाउन मेन्यू भी आता है, वो आपका यूज़ किया जाता है, ऑल्सो कॉल्ड द ड्रॉप डाउन मेन्यूज, स्क्रोलिंग बॉक्सेज, जिसमें आपके पास मल्टीपल एट्रीब्यूट्स और ऑप्शंस रहते हैं. Now you have attributes of select tag. Name, it specifies the name of the select element. Multiple, it specifies the multiple items that can be selected. Size, it specifies the number of options visible when the form is displayed. तो अब यहाँ पे आपका select tag के attributes हैं ये. Name में आपको attribute select का नाम पता चलता है. Multiple में it specifies कि multiple items आपके select हो सकते हैं. And then size, number of options visible जो आपको होते हैं जब आप form को display करते हो. So you have the option tag. The option tag specifies an option in a selection list. It is used inside a select tag. So example 5 is Angular bracket, exclamation mark, doc type, HTML, then the closing tag. Then you have opening head tag, opening title tag, selection list example, closing title tag, closing head tag. Then you have body BG color tag is equals to green, form name tag is equals to F. Then you have opening P and B tags, enter your nationality, and then you have colon, closing B and P tags, select tag, option selected tag, India, and then closing options tag. Then you have option tag, USA, closing option tag, open option tag, Russian, closing option tag, option tag, Canada, closing option tag, option tag, Japan, closing option tag. Then you have option tag, China, closing option tag, closing select, form, body and HTML टैग्स. तो आपके पास आउटपुट में क्या आ जाएगा, जैसे आप नेशनैलिटी आपके पास आप सिलेक्ट करते हो, ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है, स्क्रॉल करते हुए जाते हो, आपको और ऑप्शंस मिलते जाते हैं. तो एंटर योर नेशनैलिटी, अलग अलग नेशनैलिटी आप ऑप्शंस में डाल देंगे, उसमें से जो भी यूजर है वो उससे सिलेक्ट कर सकता है. Then you have attributes of text area tag. Name, it specifies the name of the text area element. Quotes, it defines the width,
number of character per line the text area can accommodate without scrolling. Then rows, it defines the number of lines, number of rows the text can accommodate without scrolling. अब नेम में आपका टेक्स्ट एरिया का नाम बताया जाता है, कोल्स में बताया जाता है विड्थ, एक लाइन में कितने कैरेक्टर आ सकते हैं, कितना अकोमोडेट हो सकता है विदाउट स्क्रोलिंग. फिर आपकी आती हैं रोज, कितनी लाइंस होंगी, नंबर ऑफ रोज, एंड टेक्स्ट कितना अकोमोडेट हो सकता है उस एरिया में विदाउट स्क्रोलिंग डाउन. सो सिंटैक्स इज text area name tag is equals to text1, cols is equals to 5 and rows is equals to 10. Cols stand for columns. Then in the given syntax, the name of the text area element is the text1 with width, number of columns is 5 and height, number of rows is 10. तो यहाँ पे columns 5 हैं और rows आपकी 10 हैं with the above syntax. So let's see an example. Example 6. Again same आपका जो tag है वो use होगा, angular bracket exclamation mark doc type HTML. Then you have opening head tag, title tag, text area example, closing title tag, then closing head tag, then you have body BG color tag is equals to violet, then you have H2 tag, this is an example of text area, closing H2 tag, then you have form name tag is equals to F, obviously specification है तो दो inverted commas, double inverted commas के बीच में आएगा. Then you have text area name tag is equals to items, columns is equals to 30, rows is equals to 6, and this is the first line. This is the second line, this is the third line, and so on. Then you have the closing text area, form, body, and HTML tag. Output क्या निकल के आएगा? This is an example of text area, first line, second line, third line, and so on. उसमें आपका हर एक line का row, column का width, attribute आपको दिख जाएगा कि without scrolling कितनी चीजें आपकी वहाँ पे accommodate हो सकती हैं. Then you have the activity time. Correct the error in the following HTML code. अभी तक हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं. इस HTML कोड में क्या एरर आपको दिखाई दे रहा है, जस्ट आइडेंटिफाई इट और करेक्ट कोड में आपको लिख देना है. Now let's sum up the chapter. Form is used to add interactivity to the web page. A form allows you to gather information from the visitor or customer for immediate or for later use. The form tag tells the browser where a form starts and closing form denotes where the form ends. The input tag is required when the user has to give some input or data. The select tag defines a selection list on an HTML form. A selection list displays a list of options from which the user can select an item. तो किस तरीके से वेब पेज को आप इंटरैक्टिव बनाते हो, जैसे आप भी कभी कभी वेब ब्राउजर पे जाओगे तो आप चीज़ें ऐड कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, इंटरैक्टिविटी होती है, टेक्स्ट आप ऐड कर सकते हो, यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, आप उसमें सिलेक्ट करते हो अपने हिसाब से. तो बेसिकली आपको ये जितने भी टैग्स होते हैं, फॉर्म टैग जो होता है वो आपको ये एनेबल करवाता है. Now let's explore yourself. Tick the correct option. Which of the tag is used to construct drop down list boxes, and this is your select tag. Fill in the blanks. Dash attribute of the form tag is used to give name to the form, and this is the name attribute. Write T for true and F for false against each statement. A form tag is not a container element. Absolutely incorrect, because form tag is a container element. Critical thinking. Ridhima wants to know the use of input tag. Solve her query. तो input tag में आपके सारे elements आ जाते हैं forms के, जो भी चीज़ें आप add करना चाहते हो वहाँ पर आप input tag का use करते हो. Now answer the following questions. What is the use of a form? Form is used in your web pages to make the entire web page interactive with the users, and that information can further be used to enhance and uplift the services that the web page is providing. Text 1. Find and encircle 8 meaningful terms extracted from this chapter. See across, downwards and backwards. 8 meaningful words जो इस chapter में हैं वो इस word puzzle पे भी हैं. Just see across, downwards and backwards. You will find the words and you have to do it on your own. So with this, we're done with this chapter. Go through this chapter properly, revise it once again properly, do the practicals in your labs and at your homes if you have computer systems, and rest of the exercise questions, please do it yourselves.